Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On behalf of Al-Sadiq Institute of Islamic Banking, Finance and Takaful, we welcome you all. Today's webinar is very important, and by the end of this webinar, we will be able to understand what digital economy is all about. Our guests for today have 9 years of global experience, co-founder of Alif Technologies. He focuses on Islamic fintech, halal digital economy, blockchain, crypto asset, tokenization, decentralized economy, halal supply chain, and sharia compliance. His education includes Ph.D. in Islamic Finance, INCEIF, Malaysia, MSc in Banking and Finance from Queen Mary University of London, MA Economics from Karachi University, Hafiz-e-Quran, mashallah. We welcome Dr. Farrukh Habib. Sir, so proud of you. Over to you. Jazakallahu khairan, and thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and hello everyone. First of all, I just wanted to check that my audio is clear to you and also my video. Can you please confirm? Okay, perfect. And so let me just also share my screen with you. So, and please confirm that like if my slides are visible. Okay. First of all, I would like to thank Al-Sadiq Institute of Islamic Banking, Finance and Takaful for organizing this webinar. And I'm also thankful to you guys for participating in this webinar. And inshallah, we will be focusing and talking about blockchain and smart contracts for Islamic banking and finance in this session. And let me just give you a very brief overview of my background. Actually, my background is actually Sharia and Islamic finance, but then I found in 2016 that technology chose me. It was not me that who chose technology, but what happened is that I started doing research on Bitcoin, cryptos, and blockchain from 2016 until today, and I found this very fascinating. And so I mainly focus on halal digital economy, blockchain, tokenization, and also close to my heart is another new trend, which is about climate action, ESG, and SRI, sustainable and social responsible investment, green financing. This is something which I also want to basically focus on because I believe that these areas are critical for achieving shared prosperity and a sustainable future for all. So this is, I think that the host has already introduced me, so I'm not going to spend more time on this. And let me just give you an overview of my presentation. I'm going to first introduce the topic in the sense that I would like to basically first explain what is blockchain and what are the benefits and disadvantages and use cases of blockchain. And we will see how a blockchain transaction can be done. And then we will focus on smart contracts. This is section 1, and then section 2, we will talk about Islamic finance and a typical Islamic finance transaction, issues and challenges, and how blockchain can solve these problems. And we will also use a case study to understand that how blockchain can be used for Islamic finance. And then in the last section, I will be summarizing and doing some suggestions and conveying the way forward. But before that, I would like to say that like I do not want this session to be one way, like a boring lecture. I would like you to basically participate, but I think that the organizers have already got the Q&A section. So what I will do, I will try to wrap up my presentation in 30 to 40 minutes time, and the rest of the time we will be utilizing for the Q&A.
And you can put your question and your questions in the question section, and then I will pick it up from them. Or maybe like you can turn on your audio as per the permission of the organizers, so that like you can directly ask me any question. So moving forward, let's go to focus on our section 1, which is about blockchain and smart contracts. So first, let's see what is it and how this technology has become the talk of the town and reshaping the business models of our time. So I think that you might have already heard about blockchain, and what is so new about it, I do not know, because so many people, although like following it as a trend, as a fashion, and it has become a buzzword, but what is actually behind this blockchain and what is so new and special about it? So let me just focus on this over here. So as we know, blockchain is a distributed database. So like normally a classical database is not distributed. It has to be confined in one place. But blockchain has reversed this psychology, saying that like a database can be distributed and decentralized. So this is one of the way blockchain is changing the traditional database. And it's a ledger shared among a computer network of nodes. So what does it mean is basically previously we had one point of failure. So like we are keeping the data in one place so that like it can be secured. Of course, like there were some backups of the data, but that is the main architect of a database. What happened with the blockchain is first, blockchain said that like we can basically share that data as much as possible, number one. And number two, it says that the more it is distributed, the more it would become secured. So like it has reversed the psychology, it has reversed the logic. So previously you wanted to basically make a database secure, you make it centralized. Now the blockchain is saying that no, you actually has to distribute it so that like it will on a peer-to-peer network, so that like it will become more secure. And how the ledger system works, how the data is secured, is basically the ledger keeps the data of transaction or any type of data it can have in containers known as blocks. And these blocks are basically chained together. That's why we call it blockchain, in such a way that it is updated with every block of creation. So every block which is created, so what you do is like the new block is connected with the previous block, and that's how it creates a chain. So that's why we call it blockchain. And the main features are immutable. So what does it mean is basically you cannot easily change the data in a blockchain. Why? Because it is a distributed network. It is decentralized. Many computer nodes are participating in it. Because of that, you have to basically ask at least majority of the nodes to change the data. Only then you will be able to change it. Otherwise, it is very, very difficult. For example, like if let's suppose you can influence 10% of the nodes, then you will be able to ask them to change the data. But what about the 90% remaining? They will not change the data. And because of that, nothing will happen. So at least you need to have the majority of the nodes on your side to change the data. That's why we say that like it is very, very difficult, almost impossible if for a blockchain to change the data if it is well distributed. If it's already distributed, it is super difficult to change it. This is one feature of it. So that's why we call it immutable. You cannot change it. Second is basically about decentralization, which is a very super powerful feature of blockchain. Why? Because you understand that if you want to hack the data, if you want to manipulate that data, you have to influence the whole network. At least majority of the network should follow you so that like you can change the data, or at least you need to have the computing power equal to the majority of the nodes. Only then you will be able to manipulate the data. So decentralization is a very, very super powerful feature of blockchain. So like you are not creating one point of failure, it has multiple points. So like if let's suppose one point fails, doesn't matter. It's still, the data will still be secured. That's why it has enhanced security. And
the last feature is about Turing completeness. What does it mean? Is basically blockchain provides a platform. It is, think about like an operating system, like Windows. So Windows is an operating system. So blockchain is similar to a platform, just like that. And then what you can do is like you can run any application on that operating system. For example, on Windows, you can run so many things. You can run Microsoft Office. You can run browser. You can run anything. I mean, media player. You can run other specific applications on this operating system. You install them. You install the software and then run it. So it basically says that like it can run anything, which means that like you can run any logic on it. So it's Turing complete. Blockchain is also similar. Like it does not only provide you uh, a ledger or a record keeping database, it can also run softwares. It can run applications on it. So now you can imagine that you have a platform that can securely save the data. It can also distribute that data to a vast network. And also what it can do is like it can run special applications or softwares, purposeful softwares on it. So then you can say that like what you can do with it is basically you can design any logic and then run it, meaning that like you can structure any product, you can develop any service and then run on it on that data. So this is basically how we see blockchain. And then there are many types of blockchain. We have public blockchain, private blockchain, hybrid blockchain, and consortium blockchain. These are the major four types of it. And every type of blockchain is basically has its own advantages and disadvantages and use cases. For example, if you look at public blockchain, it means that the blockchain is publicly available. There is no need for permission. That's why it is also called permissionless, that it does not need any permission. You can just participate in it. You can see the data. You can download the data. You can also insert the data, but it depends on the network that whether they want to accept your data or not. Okay, so it is completely independent. It's completely transparent. It has more trust. Why? Because it is run by a community. It is run by public. And but because as you can see, it is a very distributed and decentralized network. So you need to get confirmation from the validators for any record or for any transaction, and it takes time. Because of that, the performance is a disadvantage on this. Like it is not as fast as other blockchain. Okay, and number two is scalability is also an issue. So for example, if you want to upgrade that system, you cannot just upgrade it because there is no single authority or a single entity controlling the whole blockchain. So all the people on the blockchain, I mean, all the computer nodes, they have to also agree on it. Because of that, the scalability is an issue. And the use cases, it's like most of the cryptocurrencies are run on public blockchains, and which means that like you can do transactions on such kind of platform easily. And you can also do document validation on it. For example, let's suppose a Sadiq institute or any other institute or university can share the data of their graduates, and they have the degrees, and you do not need to have a attestation for that. So like it's already available on the blockchain, you can easily share it. So that is kind of like a use case for this kind of public blockchain. And then you have private blockchain. Private blockchain, it is good because if you want to maintain control and you want to enhance the performance, because it's only one entity controlling the whole blockchain. So because of that, the performance will be fast because it will be easier for that entity or for a person to upgrade the system. So performance is good, but trust is an issue because how much trust you can put in one person or in one entity is a question for you. And the auditability also is also important. It's a disadvantage. Why? Because this one entity is controlling the whole blockchain. So because of that, what will happen is like it can easily manipulate the data. They can change the data. They can say that, okay, now this is the data. And so auditability is an issue, and security is also issue because there is only one point of failure, because this one entity
is controlling the whole blockchain platform. But it can be used for supply chain. It can be used for asset ownership. For example, one entity can use this kind of uh, blockchain platform to recognize the asset ownership, or supply chain management can be done. So this is this is a use case for a private blockchain. Then we have a hybrid blockchain, where we try to combine the advantages of public and private blockchain. So if you look at hybrid blockchains, what they do is like they have good control of access control. So like number one. Number two is like performance is also good. Scalability is also good. But again, transparency is an issue. Upgrading is an issue. Why? Because it's a hybrid blockchain. So it combines public and private. So because of that, transparency is good, is an issue. Why? Because maybe it will be not one entity like a in the private blockchain. It's not only one entity. Maybe like it will be like 5 entities or 10 entities controlling this blockchain. For example, this kind of thing can be considered as let's suppose that there are 4 or 5 universities. They form a consortium. Okay, when they form a consortium and a group, they can use a hybrid blockchain. Okay, so this can be done. So this is good for medical records and for real estate, because there are different entities, right? Insurance, for example, in medical records, you have your doctor, hospital, and then you have an insurance company. You also have pharmacy. So all these different entities have a role to play in, and they need the access to medical records. So because of that, hybrid blockchain is suitable for this kind of specific use case. But you also have a consortium blockchain. What you do over a consortium blockchain is you privatize some data. So like you keep it private, but you also make some data public. So like publicly, it can be verifiable. So banking and research can be done through that. For example, there are different universities, they form a consortium. So what they can do is like when they are producing the research, so then in that sense, they keep it private. But once it is produced, then they can basically issue it publicly. So this can be done in a consortium blockchain. Again, transparency is an issue in that one. Banking services can also be done through consortium blockchain. Now, let's see that like how is a blockchain transaction can be done. Now, let me just tell you that blockchain is not only for transaction. It can basically record any type of data, whether it is transaction or whether it is non-transactional data. It is good for any kind of data which is made to be public. Okay, so but here, let me just give you an example of a transaction. So what happens is like initially someone requests a transaction. Let's suppose that I want to send some crypto assets or digital assets to person B. So what I will do, I will basically request this transaction. That's okay. I want to send these digital assets to person B, number one. Then the request is posted or broadcasted to a P2P network consisting of computers. We call them nodes. So what they do is basically it will go to a pool first, and we call it mempool, or like you can call it like a pool where so many transactions are there to be picked up by validators. They pick up the transactions from there, they validate it, and then they put it in a block. So validation process is done through this pool first. The network of nodes validate those transactions, the user status using known algorithms. So like there are already protocols, there are algorithms. With that, they basically validate the transaction. A verified transaction can involve cryptocurrency, like I said, contracts, records, or other information. Once it is verified, what you do is you put it in a block, okay? And you try to create a block. You complete that block. Once the block is completed, the new block is then added to the existing blockchain in a way that it is permanent and alterable. Like once you put it in the chain, then you can say that like now it is permanent, nobody can change it. And once it is done, we consider that the transaction is being done, or the data is being recorded. Now, let's move on to smart contracts. That what are smart contracts?
But before that, let me just ask you, I mean, if there is any question or any comment you want to raise, or do you want to just keep all the questions and comments for the end? Let me just see the chat because I was not looking at the chat. Okay, so I think sorry, I think the chat is clear. I will just proceed first, and then inshallah we will have a discussion later. So what are smart contracts? Smart contracts are automatic self-executing contracts. So like they are computer applications, you can say algorithms, but they are designed in a way that like they can serve as digital contracts between two parties or three parties. Okay. And they take the form of sequences of code programming language written on onto a blockchain. So what they can do, they live on blockchain, they can be executed on blockchain, and they are self-executing. So what you need to do is like you have to define a trigger point that, okay, when do you want this contract to be executed? So you can do that. So you can basically design any logic that once this condition or any condition, so like once this condition is fulfilled, do this. Otherwise, don't do this. So you can also say that. So they contain or store terms and conditions that govern parties' relationships. So like these smart contracts have all the terms and conditions embedded and coded into this. And because of that, what we can do, two parties can do any sale contract, for example, they can do any partnership contract or any other type of contract. And you can also verify said terms and conditions, and they also are self-executing. So what they can do is like these smart contracts, why we call them smart contracts is because not only that the terms and conditions are being coded into those algorithms, but they can also verify those terms and conditions, number one. And once they see that like all the terms and conditions are being met, then they can self-execute themselves. That's why we call them smart contracts. Then how do they work? So first of all, we have to have like a predefined contract, okay? And a business logic, that what is the logic? What do you want to achieve with that contract first, okay? And can you basically codify it? So you have to basically understand these two steps first. Like you need to have like predefined terms and conditions. Then you create a business logic and economic sense behind any contract. And then you codify them. And then you basically mention the trigger event, that how this contract will be executed. It will be like a time, maybe like after 5 days, you can basically execute this contract. Or maybe let's suppose that I want to sell something. For that, I created a smart contract, but I will not sell my the subject matter, whatever it is, underlying asset, unless the buyer has already put an advance payment, for example. So trigger event in this sense will become the advance payment. So when he does the advance payment, automatically the contract will execute. So the execution will occur. And the good thing about blockchain and smart contracts is that that they not only store data, they not only execute the transaction, the settlement can also be done on the blockchain, which means that like you can receive payments on blockchain. So imagine that sometimes you basically do contracts, but then you need financial institutions to do the transactions, right? Settlement can only be done through those financial institutions, right? So, but here, what is happening is like this platform is a very comprehensive platform that it not only executes contracts, but also does the settlement part. Now, let's focus on blockchain for Islamic finance, like how we can use Islamic finance for blockchain. So first of all, I think that you might, or most of you already know what is Islamic finance, what is it all about, what is Islamic banking. But let me just give you a basic understanding that Islamic finance refers to financial activities that adhere to Sharia. Sharia means Islamic law.
So Islamic law is so comprehensive. It all not only guides us in the matters of worship, but it also guides us in the matters of financial transactions, banking as well. And that's why we have seen that like 2 3 years back, we had Islamic banking started. Now it is already a $3 trillion industry. And it is very comprehensive that it's not only confined to banking products and services, but it also has capital markets, takaful, fund management, sukuk, etc. So it has become a complete alternative of the conventional system. And it has so many principles, by the way. But if I can say that fundamentally, it has two main principles. Okay. One is uh, profit and loss sharing. So like in Islamic finance, we share risk. We cannot just push the risk towards the other party, and we cannot practice risk shifting. So what we need to do is like we have to share the risk. Uh, I will I will try to explain it more. So meaning that instead of in a loan contract, for example, what it does basically somebody lends money to the borrower because the borrower needs that money, but in the conventional sense, he only says that, okay, after some time period, you will give me my principal back plus some interest. I don't care whether you lose the money or you utilize that money, make a huge profit, or you do not do anything with it. You just keep it in your safe and then give it back to me. What the lender always wants principal plus interest back, and because of the time value of money, right? So here the principal is not the lender is not sharing any profit or loss itself from the lender. So Islam basically does not uh, permit it, does not allow it. Islam promotes risk sharing and profit and loss sharing. So how do you do it? Basically, you do partnership contracts. Okay, so if you see that like somebody wants to do a business through the loan, then instead of extending the loan, you will basically become partner and invest your capital. So you will share the risk as well with your partner. And if there is a profit, then you will share it. If there is a loss, both of you will share it as well. So this is the concept of partnership. And if you really want, if let's suppose there is a person who needs money, but as a loan, but it's not for the business purposes, it's only for the consumer perspective or like for consumption purposes. So that is basically an act of charity, and because of that, Islam does not allow to charge interest on those kind of loans. Okay, so what we need to do is like when we are extending this loan, it's a charity. We will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala, but you cannot charge interest on it. So this is basically the first part. And the second part is like Islamic Sharia approach is very flexible in terms of financial dealing and banking practices. So what it does is basically strictly defines the prohibitions and says that like whatever is outside those prohibitions, you can do freely. So like because of that, basically I see that like Sharia opens the door of innovation and advancements also. So you can come up with very complex structure, innovative structure, efficient structures for your dealings, as long as they are not falling in the prohibited area. So the prohibition, there are many prohibitions. For example, riba is not allowed. Like I said before, interest is not allowed, right? So as long as your structure, your product, your service does not involve riba, you are okay. But there are other prohibitions as well. For example, gharar is also a very major prohibition, which means that excessive uncertainty. So Islam does not like that the two parties of a contract or a transaction eventually fights with each other, or there is a conflict between the two parties. So to avoid that, Islam, Sharia, Sharia actually ascertains that there is no excessive uncertainty within the contract or a transaction. And gambling-like activities are also because of that are not allowed, because as you know, in gambling, what happens is like it's a combination of two things.
One is zero-sum game and the game of chance, which means that like zero-sum game means that one party can only benefit or can only win if the other party loses, or it's at a disadvantage, right? So this is zero-sum game. So Islam wants a win-win situation. Sharia only allows you to get into a contract or transaction where both parties win, both parties basically fulfill their economic objective. Number one. Number two, gambling-like activities also involve game of chance, which means that like the outcome is not certain to an acceptable level. Of course, there is always an uncertainty in the future. No one can basically predict the future, right? But to a certain level, Islam basically accepts uncertainty, which should be very, very minor. That's why I have also put the word excessive. So excessive uncertainty is not allowed, but a small portion of uncertainty you cannot avoid. Understandable. But gambling has game of chance, which means that like it has a huge factor or an element of uncertainty, because it's like a 50-50% chance. Like when you enter into gambling, you might lose, you might win, right? And for both parties, it's a 50-50% chance. So because of that, Islam does not allow it. Now, let's take an example of a typical Islamic banking transaction. Here, I am basically focusing only on a house financing transaction. So if you go to a conventional bank, right, you say that like, I want financing for my house. So it's a very simple transaction. What happens is basically the conventional bank extends you loan for that house, and then you start paying back the loan in installments plus interest, right? And let's suppose if it is a 20 years or 15 years or 10 years mortgage, then it means that like within that period of time, you have to pay back the conventional bank with the principal also, as well as the interest, right? But Islamic banks cannot do it. Why? Because I already have said that Islamic banks cannot charge interest. So how do they basically remain competitive, but at the same time can extend finance? Yeah. So what happens is I was saying that the customer and the bank jointly purchase the property. Assume that the customer has already paid 10% of the price and the bank is paying 90% of the price, right? So the bank leases its portion of the property to the customer, and the customer pays the lease rental with an additional amount to gradually buy the bank's ownership in the property. So what happens is like first, they become the partner in the house. Like 10% is owned by the customer, 90% by the bank, and then bank basically does a ijara contract. So like leases the portion of the property to the customer. The customer pays to which is rent, number one. And number two, because as you know, the customer wants to own the complete house. So the customer starts buying the shares in the house gradually throughout a set period. At the end of the lease term, the partnership will be terminated with the customer owing 100% of the house and the title transferred to the customer. So that's how a house financing Islamic transaction is being done. You can see that like there are mainly 3 to 4 contracts. One is, first of all, the customer basically promises the bank, Islamic bank, that he will buy the house, number one. Number two, then there is a partnership contract. Number three, there is a ijara or a leasing contract. And then after that, there is a sale contract of buying and selling the shares in the house. So there are 4 contracts. Remember that, like I told you, that in conventional bank, there is only one contract, a straightforward lending contract, but it is not Sharia compliant. But this one is Sharia compliant, but you can see it's a little bit complicated. Because of that, the main challenges and issues with Islamic banking is that like there are sometimes multiple contracts. One product has multiple contracts in it, number one. Number two, sometimes it is
super important to follow the correct sequence. Because if, let's suppose, in the previous example, if you start having the ijara contract before even becoming a partner, then the ijara contract will be nullified. So sequence is also important. Number three is Sharia non-compliance risk is high because of complexity, and sometimes there is gharar. And now this is quite interesting, that why there is gharar, because sometimes what happens in a murabaha transaction, for example, the underlying asset is there, but sometimes it is uh, to inspect that underlying asset is a difficult task. Uh, I have seen some news that where the London Metal Exchange was used for murabaha transaction, but what happened is there was no underlying asset for a murabaha transaction. Like there were nothing, but the subject matter has been sold and being purchased also for a murabaha transaction. So in that sense, I would say that there is a chance of gharar as well. And the high cost is also there, because you are, instead of executing one transaction, you are executing 4 transactions. So there is a high cost for it. Now, when you see that, then you can say that smart contracts can come into the play, because they can ensure that there is an easy execution of multiple contracts, and complex business logic is not a problem for them. They can handle it. Number two, like you can have a trigger functionality and surety in sequence. So like you can say that, like, if the promise is not being executed, you cannot go to the second phase. So in that sense, smart contracts ensures that there is always a sequence. If the sequence is not followed, it will not execute the transaction itself. You understand? So which is a very, very powerful feature of smart contracts as blockchain, that when a transaction is there, it means that, like, it has already followed all the terms and conditions, it has already followed the rules you have defined, and it has already followed the sequence. Because of that, you can see that your Sharia audit, Sharia review in Islamic banks can be very, very easy. Now, second thing is about blockchain itself. So generally speaking, complete on-chain traceability of funds is also available on blockchain. So you can trace that, okay, where are those funds are going. So which means that, like, because of that, there is a lot of transparency, and Sharia audit of all transactions can be done. And not only that you are doing the Sharia audit and other things, you can actually, like I said before, settlement can be done with digital assets. So because of that, the cross-border transaction can be done very easily at a very lower cost, and quickly also, and with an ease. So because of that, you can see that, like, it's a comprehensive platform where it ensures transparency, auditability. It can also do the settlement easily, and it can also reduce your Sharia non-compliance risk. Now, here is a use case of Blossom Finance in Indonesia. So what it does, it uses blockchain and smart contracts, and mainly they offer sukuk, and these are mudaraba-based sukuk, okay? And the instruments they are using is basically crowdfunding. So like people who have extra money to invest, they can basically do crowdfunding and buy those sukuks. These mudaraba sukuk can be sold to them. And the main focus area is microfinance, impact investing, social finance only. So like those who are getting the finances are actually people who are in need for that, and then they do not have mainly the access towards the mainstream financial instruments. And according to them, by the way, like I haven't checked and audited my personally this use case, but I can just tell you from their website, they say that like their gross profit is almost 10 to 15% per annum. And what do they take as mudarib is actually 20 to 30% of the gross profit. So this is a use case of blockchain where they automated all the things through smart contracts. I will just move on to the conclusion now, and then we will start for the questions. So I would say that like blockchain is not a buzzword only, and not a trending uh, 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 terminology. But what I would say, it's like it is basically a revolutionary technology if we look into it seriously. And the way forward, I would suggest, is like we need more research and development in this area,
and regulators should come forward to basically create a framework, a conducive environment for blockchain projects. And I think that this is a very good initiative by Al-Sadiq Institute for spreading education and awareness. I would say that like there should be more robust educational programs and awareness sessions. Um, and I would also say that like there has to be some pilot projects. People should start thinking about them, just like Blossom Finance. It was not a bank, by the way. It was a fintech startup. So I would suggest, and I am basically more focused on the fintech startup because banks, they have legacy system. They are big organization. They are super regulated. And because of that, it is very difficult for them to test new areas and do some innovative work unless and until it is tested and proven. So for me, I mean, I would say that fintech startups should come forward, Islamic fintech startups to utilize this. And there is a need for collaboration. For example, not only Sharia scholars, academicians, and market practitioners, regulators should also come in, and there should be a convergence between all the stakeholders. So thank you so much, Jazakallah khaira, for listening to me. Now I think that we can start our Q&A session. Over to you, the organizer. Thank you, Dr. Farrukh Habib, we're really honored to have you with us. We have really gained a tremendous amount of knowledge with you. And now the question and answer session is open. You may raise your hands so that we can unmute you to ask questions with the Dr. Saab. Okay, I see while people are thinking maybe they are too shy to ask direct questions, but I can see there are two questions in the chat section. So let me just say them, and then I can basically respond to them. So the first question is about, can you share us any book to download, start learning Islamic banking for beginners? There are two books in my mind right now. I would suggest reading them. In fact, three. Number one is Introduction to Islamic Finance by Sheikh Mufti Taqi Usmani Sahab. And I would also suggest Understanding Islamic Finance by Muhammad Ayub Sahab. And also there is a book, it's a textbook, which is a very comprehensive book. It is called Islamic Financial System, Principles and Practices by ISRA in Malaysia. So I would suggest these three books to start with. Somebody said, does blockchain can be managed by regulators within the country? Yes, it can be managed. It can be done. There is no problem with that. I mean, it depends that, okay, what type of blockchain you want to use and for what purpose and what you are going to do with it. So, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इमरान अहमद, मैं एमसीबी बैंक में होता हूँ एज यूनिट एट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। मैंने फिनटेक में भी काम किया हुआ है। अच्छा, मेरा सवाल ये सर कि फिनटेक मैंने जो काम किया था वो जो है एक्वायरिंग बिजनेस में थे, तो एक्वायरिंग बिजनेस में अगर वो हैं तो वो ब्लॉकचेन को किस तरह से उसको ट्रांजैक्शंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? क्योंकि इसमें तो जब आप ट्रांजैक्शंस करते हैं ब्लॉकचेन में तो उसकी एक फी पे करनी पड़ती है, गैस जिसे कहते हैं, क्योंकि वो जाके आपकी सेव होती है उसकी ट्रांजैक्शन फीस। तो इतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बैंकिंग सेक्टर में या फिनटेक में होती है, मतलब अगर मैं कहूँ एक्वायरिंग के बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक दिन की 1 लाख या 10 लाख हो रही है, ठीक है, पॉज की ट्रांजैक्शंस। तो अब उसको अगर हम उस पे लेके आएंगे ब्लॉकचेन पे और उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, तो उसकी जब रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो हर एक ट्रांजैक्शन पे हमें फी पे करनी पड़ेगी। तो फी का जो लेवल होगा तो फिर वो महंगा नहीं पड़ जाएगा फिनटेक को या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन को? वो इसलिए क्योंकि दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो रिकॉर्डिंग हो रही होगी ना, वो ऑटोमेटिकली हो रही होगी, आपको सेपरेटली कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी। अगर आपने 1 लाख ट्रांजैक्शंस करनी है ब्लॉकचेन पर, तो 1 लाख ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगी। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी रिकॉर्ड हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला फीस पे करनी पड़ेगी 1 लाख ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं जो आपको बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर, यानी कि 10 सेंट के अंदर, सिर्फ 10 सेंट आपको फीस पे करनी होगी पर ट्रांजैक्शन, रिगार्डलेस ऑफ इट्स वॉल्यूम। लेट सपोज कि आपकी जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है वो समझिए, अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, या 10 लाख रुपए, या 1 करोड़ रुपए भी है,
उसके ऊपर आपको 10 सेंट ही पे करने पड़ेंगे, और वो ट्रांजैक्शन आपकी 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो भी जाएगी। सर इसमें इथेरियम सबसे बेस्ट है, इथेरियम वगैरह नहीं, के ऊपर इथेरियम लेके जाए। बेसिकली स्लो है, इस वजह से उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है, उसकी गैस कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। लेकिन हम्म। उसके दूसरी ब्लॉकचेन ऐसी हैं, जैसे सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, वो ब्लॉकचेन ऐसी हैं जो आपको बहुत ही कम फीस के अंदर आपको ट्रांजैक्शंस करने के लिए देती हैं। ट्रोन नेटवर्क वगैरह जो है, वो आपको $1 से ज्यादा नहीं लेते फीस। तो ट्रांजैक्शन आपकी 1 मिलियन डॉलर की भी अगर होंगी, तो वो $1 ही उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। तो क्या वो भी इसी तरह से, जिस तरह से इथेरियम अपना पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क हमें प्रोवाइड करता है, तो क्या सोलाना और ये सब भी पूरा कंप्लीट ब्लॉकचेन नेटवर्क हमें प्रोवाइड करेंगे? जी, ऐसा ही है। तो अगर वो बैंकिंग सेक्टर भी इसी तरह से अगर उस तरफ जाता है तो उसको भी इसी तरीके से होगा, क्योंकि हाँ हमारे पास जो, जब मैं वहां था फिनटेक के अंदर, तो नंबर ऑफ मिलियन की ट्रांजेक्शन, मिलियंस में ट्रांजेक्शन होती, तो हर एक ट्रांजेक्शन मतलब 100,000 ट्रांजेक्शन है फॉर एग्जाम्पल हर कस्टमर की, तो वो हर एक ट्रांजेक्शन पे 10 सेंट्स क्यों चार्ज करेंगे, या टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हाँ, पे, या पर डे? आई मीन वो टोटल नंबर पे नहीं करेंगे, बल्कि हर ट्रांजैक्शन पे करेंगे। लेकिन उसका एक और तरीकाकार है, मतलब जी वी कॉल इट नेटिंग ऑफ सिस्टम। नेटिंग ऑफ सिस्टम में होता ये है कि आप ऑफ चेन ट्रांजैक्शन को नेट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्सचेंज में होता है, एक कोई भी डिजिटल एसेट एक्सचेंज होगा ना, तो वो सारी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे नहीं करेगा अगर वो सेंट्रलाइज है। तो वो क्या करता है कि वो नेट ऑफ कर लेता है ट्रांजैक्शंस को, जिसके ऊपर वो सिर्फ 0.01% फीस चार्ज करता है, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन पे। 0.01%, उससे भी कम करते हैं कुछ। 1% जो है वो ऑलमोस्ट लाइक स्टैंडर्ड मैक्सिमम है, ठीक है। तो सर, तो मैं क्या कहने का मकसद ये है कि आप उसको फिर ऑफ चेन कर देते हैं, और ऑन चेन ट्रांजैक्शन जो होती हैं, सिर्फ उनकी आपको थोड़ी सी हाई गैस फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो फिर भी इसमें फिर 10 सेंट। एक सिलसिला जो सिक्योरिटी का है, ब्लॉकचेन का लाने का मकसद ये है कि ये डेटा जो हैक नहीं हो सकता, ठीक है, सिक्योर्ड है। बेसिक मकसद जो था इसका वो यही था। और ये डेटा जो है इसको चेंजेस कोई नहीं कर सकता, ये एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हम इसको सेंट्रलाइज, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट तो डिसेंट्रलाइज का है ब्लॉकचेन का, बिल्कुल। और अगर इसको सेंट्रलाइज ही अगर हम करके और फिर उसी तरीके से चलाएं, तो फिर हमारी सिक्योरिटी, अगर वहां कोई हैक कर लेता है सेंट्रलाइज डेटा को, या वहां पर कोई मसला आ जाता है ऑफलाइन करके, तो वो प्रॉब्लम नहीं कर देगा, सिक्योरिटी इशू नहीं आ जाएगा? है, लेकिन आपने देखा ना कि मैंने बताया था अपनी स्लाइड्स में कि बैंकिंग के लिए कंसोर्शियम ब्लॉकचेन ज्यादा अच्छी है। जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस आपकी ऑफ चेन होंगी, जिसमें आपको कॉस्ट का मसला है छोटी छोटी हम्म। ट्रांजैक्शंस के अंदर। जी। जो आपके अंदर बड़ी ट्रांजैक्शंस होंगी, उसको आप ऑन चेन ही करेंगे, और उसमें आपको गैस का मसला नहीं होगा इतना ज्यादा फीस का। तो कंसोर्शियम ब्लॉकचेन जो है वो इसीलिए बैंकिंग के लिए ज्यादा सूटेबल है। तो और सिक्योरिटीज का जहां तक मसला है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको साइबर सिक्योरिटी टाइट ही रखनी पड़ेगी। और उसके लिए प्रोसेस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर वो करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बड़े बड़े बैंक्स इस वक्त ही कर रहे हैं। मतलब आप अगर जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली वगैरह की बात करते हैं, ये बड़े बड़े बैंक्स, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये लोग इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि दूसरों को भी मौका मिल जाए। आई कैन सी सदाकतुल्लाह खान साहब रेज हैंड, तो इंशाल्लाह। जी सर, जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया सबसे पहले कि आपने एक बहुत खूबसूरत एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन दी सब्जेक्ट मैटर पे। जज़ाकल्लाह। और अल सादिक लोगों का बहुत शुक्रिया ये अरेंज करने का। ये बड़ी अच्छी हमारी नॉलेज इंक्रीज हुई ब्लॉक चेन के मुताबिक। अ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अलमुइद मेडिकल सेंटर शारजा में। तो उस एंगल से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि इसमें मेडिकल सिस्टम का मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मेडिकल रिकॉर्ड और मेडिकल ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के थ्रू भी मेंटेन हो सकती है। और जी ब्लॉकचेन लेजर सिस्टम कौन मेंटेन कर रहा है? कोई इंडिविजुअल कंपनीज है या डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं उसमें? यानी क्लाउड बेस है इनका सिस्टम, क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में आप हाँ, बताइए। वेरी क्विकली ये बता देता हूँ कि देखें, ब्लॉकचेन कोई कंपनी बनाती है, अगर जैसे इथीरियम एक कंपनी भी है, उसने अपनी एक ब्लॉकचेन बनाई है। कार्डानो, सोलाना, बाइनेंस ने अपनी ब्लॉकचेन बनाई है। तो ये सारी की सारी ब्लॉकचेन्स तो वो लोग बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी अकेली उसको कंट्रोल कर रही है। ये ज्यादातर जी। ये पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं।
और पब्लिक ब्लॉकचेन्स के अंदर इसको जो कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं या इसको ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं वो कंप्यूटर नोड्स होती हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको रन इस ऑपरेट आप इसको इस तरह से समझिए कि ये जो सिस्टम है वो रन जो होता है वो कम्युनिटी बेसिस पे होता है, लेकिन इसको बनाता है एक कंपनी और फिर इसको कम्युनिटी को डिलीवर कर देती है और फिर कम्युनिटी इसको ऑपरेट कर रही होती है। नंबर एक, इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स भी हैं, इसमें मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स हैं, हर एक ब्लॉकचेन का अलग एक मकसद होता है। फाइनेंशियल ब्लॉकचेन्स भी होती हैं, टेजोस जैसे है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए बनाई गई हैं, ऐसी ब्लॉकचेन्स भी होती हैं। मेडिकल रिकॉर्ड्स की आपने बात करी, तो उसके अंदर मैं ये कहूंगा कि मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए भी ऐसा है कि ब्लॉकचेन यूज की जा सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने एक कंजोर्शियम ब्लॉकचेन बनाई जिसके अंदर कुछ डेटा आपने यूजर के पास अपने उसने अपना रख लिया, और वो क्या कर सकता है कि वो अलाउ कर सकता है खुद से कि ये डेटा किसको रिलीज करना है और किसको नहीं करना। सही है, तो उसका डेटा पब्लिक नहीं होगा और वो खुद चूज करेगा कि किस इंस्टीट्यूशन को, लेट सपोज कि मैं कहीं जाता हूँ, किसी हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक जाता हूँ और मैं फिर उनको अप्रूव करता हूँ कि मेरा डेटा इनको एक्सेस हो जाए, और कितना डेटा, कौन सा डेटा इनको अप्रूव एक्सेस होना चाहिए, सिर्फ मैं उनका वो दे सकता हूँ। तो और ये सारा काम इजीली ब्लॉकचेन पर हो सकता है, इस सिस्टम को बहुत इजीली बनाया जा भी चुका है और ये इस्तेमाल हो रहा है। इवन आइडेंटिफिकेशन का जो सिस्टम है वो भी आ सकता है, जैसे हमारा पाकिस्तान के अंदर नादरा है, वो उसमें भी ये काम हो सकता है कि आप नादरा का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन पे ले आएं और फिर वहां से आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये भी हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। जी अली एहसन। अली एहसन अगर नहीं है तो अस्करी साहब, आप यू कैन गो फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़र्रुख हबीब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम अस्करी है। आई वर्क फॉर बैंक हबीब लिमिटेड कराची सोन। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग एंड लेटिंग द क्वेश्चन ऑफ माई। सर मेरा 10 इयर्स जो है जनरल बैंकिंग एक्सपीरियंस है, और आई वुड बी न्यू टू इस्लामिक बिगनर, बैंकिंग बिगनर, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की एक जो है एक रूलिंग है कि ऑल द बैंक शुड बी इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट। तो गोइंग टुवर्ड्स हमारा जो रेगुलेटर है इट डज नॉट अलाउ अस फॉर सच इथेरियम, क्रिप्टो, बाइनेंस और इस तरह ब्लॉकचेन्स ना, आपको पता होगा ये फिलहाल। तो मतलब लिविंग इन इन सच एरा, हम जो चीज़ अभी आपसे लर्न कर रहे हैं यकीनन इट वुड बी बेनिफिशियल। मतलब एजुकेशन कभी आपको जो है ना नुकसान नहीं देती या वो नहीं करती, लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ जो है ना हमारा रेगुलेटर नॉर्मली टेमिनोस का T24 एक स्टार जो नेटवर्क है वो अलाउ करता है कि भाई आप ये इंस्टॉल करें अपने बैंक्स के अंदर। कुछ बैंक्स अपना बनाते हैं, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं या अपने परचेज सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे होते हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है जैसे आपने बताया बाइनेंस का, यहाँ पे मैं यूट्यूबर्स को भी देख रहा था कि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स जो कि ज़्यादातर जो है फूड व्लॉग्स बनाते हैं जिनका कोई ताल्लुक किसी भी तरह से किसी भी एंगल से नहीं है बाइनेंस, क्रिप्टो, इथेरियम, लिथियम वगैरह से, जिनको शायद नॉलेज भी नहीं है, वो मेरी तरह बिगनर्स ही हैं, सही है। और मैंने ही पुटअप किया था कि बिजनेस के लिए कौन सी बुक्स होनी चाहिए, वो तो सर उनको वहाँ पे सीशेल्स वगैरह में बुलाया गया, उनको उनका खर्चा उठाया गया और दे विल मार्केट फ्रॉम देयर पेजेस। फिर बाइनेंस यहाँ पे मैंने सुना है बैन भी कर दिया गया। तो आई एम कमिंग टुवर्ड्स एंड समराइजिंग माय क्वेश्चन सर, कि हमारा रेगुलेटर तो अलाउ ही नहीं कर रहा। फिर बात ये है कि सर देखें, कोई भी चीज़ आप अडेप्ट करते हैं, अडेप्टेबिलिटी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की किसी भी नेटवर्क के ऊपर, तो उसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो यूज साइन होते हैं, उसकी गारंटीज होती हैं। तो जो कंपनीज इसको बनाती हैं वो तो आपको पता है कि वो ऑफशोर बैठती हैं, सही है। तो इसका जो सिक्योरिटी का प्रोसीजर्स है वो क्या है, उसकी क्या गारंटीज है, क्योंकि बैंक तो गारंटी राइट, करता है कि योर डिपॉजिट्स विल बी सेफ इफ यू कीप योर डिपॉजिट्स विद अस, सही है ना सर। तो इसकी सिक्योरिटीज की क्या मतलब मैं जानना चाहूंगा, इसको कौन गारंटी करता है। देखें, अच्छा थोड़ा सा फ्रॉड्स कंफ्यूजन है वो फ्रॉड्स मैं के दूर कर उसमें, देता जी हूँ। जी। जी श्योर। जी। देखें, क्रिप्टो करेंसीज अलग चीज है, ठीक है, ठीक है। वो इट्स लाइक एन एप्लीकेशन यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉकचेन सिर्फ उसी के लिए यूज हो सकती है। जैसे कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, अच्छा। आप इसके ऊपर कोई भी
एप्लीकेशन चला सकते हैं। लेट्स सपोज कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बोला कि ट्विटर जो है वो बैन कर दिया जाए, ठीक है, तो ट्विटर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या टेलीग्राम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है। लेकिन इसके अलावा आप दूसरी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से बैंक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही रेगुलेटर्स की तरफ से ना ही गवर्नमेंट की तरफ से, कि बैंक्स जो है वो ब्लॉकचेन इस्तेमाल नहीं कर सकते या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्वर्जेशन है, कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्कशंस हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं कोई भी। यानी अगर कोई बैंक बोलता है कि हमें सिर्फ ब्लॉकचेन यूज करनी है, उसके इंटरप्राइज सोल्यूशन को यूज करना है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। बाइनेंस का जहां तक ताल्लुक है, तो देखें समझें कि बाइनेंस ने ना सिर्फ ये कि अपनी एक ब्लॉकचेन बनाई है, बल्कि उसने अपना एक टोकन भी बनाया है, अपना एक एक्सचेंज भी बनाया है, उसने और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स अपनी बनाई हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ब्लॉकचेन ही है, वो एग्नोस्टिक है कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं, सवाल ये है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान में बाइनेंस एक्सचेंज जो है वो बैन हो, या फिर उसको नहीं इस्तेमाल, बैंक्स जो है वो इस्तेमाल करने से लोगों को रोक रहे हों। अच्छा, मैं खुद क्योंकि सूरत हाल का मुझे पता है, तो मैं अब वर्ड्स जो है वो बहुत केयरफुल इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि वो ऐसा नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसीज की अभी भी जो है पाकिस्तान के अंदर एक ग्रे एरिया है, इट्स नॉट इलीगल। सही है, ग्रे एरिया का मतलब ये होता है कि ना ही उसके ऊपर बैन करने की कोई रेगुलेशंस मौजूद हैं या लॉ मौजूद है, ना ही ऐसा है कि उसका कोई अलाउ करने वाला लॉ मौजूद हो, ठीक है, तो इट्स अ ग्रे एरिया। लेकिन इवन देन बैंक्स, आई अंडरस्टैंड कि वो जो है वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेते हैं, वो दे आर सुपर केयरफुल अबाउट इट, तो वो स्टिल दे कैन यूटिलाइज ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट यूजिंग क्रिप्टोस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इससे काफी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा इस बात से। बाकी रहा कि जी व्लॉगर्स वगैरह हैं या बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो अगेन वही बात है कि वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, हमें उसको देखना होगा। बहुत सारे लोग फर्ज करें अगर कहें कि हमने एक मुदारबा स्कीम स्टार्ट करी है और इसको प्रमोट करना शुरू कर दें, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके पीछे रेगुलेशंस हैं, उनके पास लाइसेंसेस अप्रूवल्स हैं, टीम कौन सी है, वो कंपनी कहाँ पर है। पाकिस्तान में भी कंपनीज के ऊपर कोई ऐसा बैन नहीं है कि, या फिर उन कि वो कोई ब्लॉकचेन अपनी स्टार्ट ना कर सकें। इस्लानी इवन लाइक पाकिस्तानी बैंक्स कैन स्टार्ट देयर ओन कंसोर्शियम ब्लॉकचेन, देयर इज नो बैन ऑन इट, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, और उसके जरिए से फिर आप ऑफशोर कंपनीज वगैरह को भी अवॉइड कर सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है, कोई कुछ लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो एक अलग कहानी है। उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे फ्रॉड भी हो सकते हैं, बहुत सारे स्कैमर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे जिनवन लोग भी हो सकते हैं। वी हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। अफनान जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम मुहम्मद सलाम। अफनान है और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। अभी करंटली दूसरा साल चल रहा है एंड तकरीबन फोर्थ सेमेस्टर में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन को समझने के लिए डेवलपमेंट साइड जाना पड़ेगा, या फिर क्योंकि मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि मैं हार्डकोर प्रोग्रामिंग की साइड पे जाऊँ, क्योंकि ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट सारी हार्डकोर प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस कर रही है, जैसे सॉलिडिटी मैंने सुना, और नोड डॉट जेएस हो गया, बाकी और भी लैंग्वेजेस हैं। तो ब्लॉकचेन को समझने के लिए डेवलपमेंट साइड जाना जरूरी है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ब्लॉकचेन का जो किरदार है वो सिर्फ फाइनेंस और ट्रांजेक्शन के हद तक है, या ये टेक्नोलॉजी और भी कई एरियाज में काम कर रही है? सही है। पहला क्वेश्चन आपने बोला कि इस ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए कि अब हार्डकोर टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक बेसिक टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन बेसिक। दूसरा, डिपेंड करता है कि आप अपना क्या करियर परस्यू करना चाहते हैं, क्या प्रोफेशन लेना चाहते हैं। इफ यू आर अ डेवलपर योर सेल्फ, देन ऑफ कोर्स लाइक नो कोडिंग, यू नीड टू नो लैंग्वेजेस, कौन सी आपको यूज करनी है, आपको एल्गोरिथम्स कैसे बनाने हैं, आपको प्रोग्राम्स कैसे बनाने, वो आना चाहिए। लेकिन अगर आप उसकी बिजनेस साइड पे जाते हैं, उसकी इकोनॉमिक साइड पे जाते हैं, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक टेक्निकल नो हाउ होनी जरूरी है, और उसके बाद आप उसकी बिजनेस एस्पेक्ट पे या फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपने किया वो ये था कि इसके ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंस के अलावा भी यूज केसेस हैं। जी बिल्कुल हैं, बहुत सारे हैं। DHL फॉर एग्जांपल, इट्स अ बिग कंपनी, दे आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट ब्लॉकचेन
यहाँ दुबई के अंदर अगर आप बात करते हैं तो DLD दुबई लैंड डिपार्टमेंट जो है वो ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है लैंड रजिस्ट्री के लिए। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ब्लॉकचेन के और भी बहुत सारे यूज केसेस मौजूद हैं जहां पर वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन नॉन फाइनेंशियल यूज केसेस भी बहुत सारे हैं। सप्लाई चेन के अंदर ये इस्तेमाल हो सकती है ब्लॉकचेन। बहुत सारे मेरे पास एक प्रोजेक्ट था जिसने मुझे कांटेक्ट किया था, लाइक व्हाट दे वर डूइंग, इट वाज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, और वो ये चाह रहे थे कि हम अपनी एक मेडिसिन या एक आप कह लीजिए कि एक इंग्रेडिएंट बनाएं जो कि वैक्सीन के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको हम वो लोग चाहते थे कि वो ब्लॉकचेन के ऊपर चली जाए ताकि उसकी ट्रेसेबिलिटी आसान हो। तो ये भी हो सकता है। बहुत सारे इसके यूज केसेस हैं जहाँ पे भी देखें आपको जरूरत पड़ेगी पब्लिक रिकॉर्ड को वेरीफाई करने की, डेटा को पब्लिकली अवेलेबल करने की, और आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, वहां पे ब्लॉकचेन यूज हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। आई होप कि मैंने आंसर कर दिया होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिल सके। तो जी हसन बताएं। यस हसन, ऑन यू आर ऑन म्यूट। Hassan might come back to us, maybe. I mean, okay, Hello, Hassan. Yes, can you hear me? Assalamu yeah, alaikum. I can hear you. Yes. First of all, I want to ask you a question about the trust on data or transaction in the blockchain. Can we really trust on the data now? Currently, can you share some information about it? Because the data or the transaction in the blockchain are immutable, they cannot be changed. So please tell me about something. हाँ डेफिनेटली, जब ब्लॉकचेन जो है वो इसी पर्पस के लिए, आई मीन वी हैव क्रिएटेड blockchain for the same purpose, that we want transparency, openness, and immutability, so that like nobody can else manipulate the data. So because of that, the transactional data which is already embedded on a public blockchain is trustable in the sense that this transaction has already happened, actually happened. It's not fake. It is not something made up. But of course, like you do not have the data that for what purpose that transaction has been done. So yeah, this is off-chain data. Like for example, I want to send you 1 Bitcoin, or I want to send you any digital asset, then I can do that. And once you receive it, it's the transaction is considered completed. Then I cannot reverse it. I cannot basically change the data, or nobody else can do it. In that sense, it is trustable that now 1 unit of digital asset has been transferred to Hassan, for example. So it can be done, and it is trustable. Even let's suppose that if you have a very strong verification system for the off-chain data, once this data has been put on blockchain, then of course, like it is trustable again. You can easily share it with other parties. Let's suppose that your identity is on blockchain. So first, we have to ensure that there is a foolproof and a strong system of verification that this is your identity. But once it is put on blockchain, then, and this is a public blockchain, by the way, it's not a private blockchain, then I can say basically that now this data is immutable and cannot be changed. So in that sense, yes, the trust level is very, very high on blockchain transactions. So now we will move on to Afnan. Afnan, do you want to ask any question? Assalamu alaikum. Can I ask a question? Yeah, sure. Please go ahead. ओके डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपका लेक्चर था, हमने बहुत कुछ लर्न किया है, लेकिन मेरी कुछ क्यूरीज हैं ब्लॉकचेन के हवाले से कि ब्लॉकचेन को हमने जितना भी अभी तक डिस्कस किया है, इट्स अबाउट मोर रिलेटेड टू डेटा स्टोरेज, कि आप किस तरह को डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, डेटा रिकॉर्डिंग वगैरह। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसका यूजेज हम करेंसी के पर्सपेक्टिव से कैसे कर सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, कि जैसे अभी एक और साहब ने भी पूछा था कि क्रिप्टो इज बैंड इन पाकिस्तान, तो हम इसको ब्लॉकचेन को करेंसी के हवाले से किस तरह से यूज करें पाकिस्तान में। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि जनरल पब्लिक जो है वो ब्लॉकचेन को करेंसी के पर्सपेक्टिव से कैसे यूज कर सकती है, और फाइनेंशियल डीलिंग्स अपनी किस तरह से कर सकती है, काइंडली गाइड कीजिएगा।
ओके, देखें, सबसे पहली बात ये है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट data storing, because I also spoke about smart contracts. So smart contracts, what they can do is actually they can program any logic, and they can basically perform any transaction or even any task. तो कोई भी टास्क हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप वो परफॉर्म कर सकते हैं ब्लॉकचेन पर ही। तो उसकी वजह से आई मीन यू कैन बेसिकली क्रिएट full financial transaction. I gave you an example of house financing, Islamic house financing, which is musharaka mutanafisa. So you can actually create a whole product through smart contracts of musharaka mutanafisa on blockchain. It will be done through blockchain itself. So so because of that, मैं कहूँगा कि आप कोई सी भी लॉजिक ब्लॉकचेन पे बना सकते हैं। ठीक है, लोग इस वक्त गेम्स बना रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, लोग इस वक्त बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बना रहे हैं आइडेंटिटी के, ट्रांसपेरेंसी के, ऑडिटेबिलिटी के, एंड आल्सो रिकॉर्ड्स कीपिंग के। और फिर उसके ऊपर सिर्फ यही नहीं है, आप उसके ऊपर जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करते हैं, देन यू कैन प्रोड्यूस एनी सर्विस, यू कैन प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट ऑन इट। आई मीन देयर आर बैंक्स which are actually dealing in blockchain, in cryptos as well, not in Pakistan but outside Pakistan. तो वो क्या कर रहे हैं कि basically they are also integrating with blockchain and directly dealing with cryptocurrencies or digital assets. Now, your second question about like how to create a cryptocurrency या फिर उसका context किस तरह से है blockchain के साथ, तो देखें, असल बात ये है कि blockchain uses tokens, which means that with those tokens you can give any value to them on the basis of values, source of the value, कि जो भी वैल्यू की सोर्स होगी वो सोर्स आपको उस पर ब्लॉकचेन पर मिल जाएगी, नंबर वन, उस टोकन को मिल जाएगी। और वो टोकन जो है उस वैल्यू की बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, एक कंपनी है विच इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है, and what they do is they have audited reserves of US dollar. उनके पास millions of dollars हैं और उसकी वो क्वार्टरली बेसिस पे उसका ऑडिट भी करवाते हैं। उसकी बेसिस पे उन्होंने किया ये है कि टोकन इशू किया है, यानी कि अगर फर्ज करें कि दे हैव $100 million in their reserves, तो दे हैव इशूड 100 million टोकन। USDC उनका टोकन है और वो इक्विवेलेंट टू $1 के है, इट इज अ स्टेबल कॉइन। तो इस तरह से वो, और वो सारा का सारा ब्लॉकचेन पर है। तो नाउ यू कैन सी द कनेक्शन बिटवीन द टू करेंसीज, कि आपने एक हाथ में रिजर्व्स रखे हुए हैं जो क्वार्टरली बेसिस पे इंडिपेंडेंटली ऑडिट हो रहे हैं कि भाई हमारे पास 100 मिलियन, 200 मिलियन, $1 बिलियन के एसेट्स रिजर्व रखे हुए, नंबर वन। ऑन द अदर साइड यू हैव टोकनाइज्ड दोस रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ USDC टोकन। तो USDC टोकन जो है वो क्या करता है, इट्स अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अंडरलाइंग एसेट विच इज अ US डॉलर, एंड it is basically it basically maintains its peg with US dollar. So like one token represents one US dollar in the blockchain and tokenized form. इस तरह से भी किया जा सकता है। और क्रिप्टो करेंसी की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पे तो फर्स्ट यूज केस ही ब्लॉकचेन का वो क्रिप्टो करेंसी था कि आपने जब ट्रांजैक्शंस करनी है तो फिर आपकी ट्रांजैक्शंस के टोकन को वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली मिलेगी, क्योंकि वो कोई प्रोजेक्ट से बेस करता होगा या फिर किसी अंडरलाइंग एसेट पे बेस करता होगा, और फिर आपकी ट्रांजैक्शंस उस पर रिकॉर्ड भी हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, लाइक देयर इज अ कंपनी, इट वाज माय क्लाइंट and it was a Singaporean company, and they tokenized gold and silver and precious metals. So what they were doing is, like, let's suppose that 1 gram of gold or 1 kg of gold or whatever specific unit is that there, वो ये करते थे कि they have audited physical gold in their vaults, and on the basis of that they were issuing tokens. So like you have a digital form of 1 gram of gold, for example, or 10 gram or whatever unit you want, or because of that you can easily transact with the token, and you already know with surety that the physical gold is available in the third party vaults audited by third parties. So this is another example. Afnan,
सर Yes. अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, तो अच्छा इसमें जो आपने एग्जांपल दी कि अदर देन ट्रांजैक्शन और फाइनेंस के अलावा भी जो यूज केस है, तो आप उसको थोड़ा और एलेबोरेट कर दें कि उसका यूज केस किस तरह का होगा जो हो रहा है, और जो आपने दुबई वगैरह के एग्जांपल। और जैसे सेकंड, मैंने आपको दुबई लैंड रजिस्ट्री की एग्जांपल दी, डीएलडी के अंदर होता क्या है कि जब भी फर्ज करें कि किसी शख्स ने जो है कोई पीस ऑफ लैंड खरीदा है, जैसे मिसाल के तौर पे जमीन खरीदी है या प्लॉट खरीदा है, तो वो उसकी रजिस्ट्री जो है वो जाके ब्लॉकचेन में चली जाती है। क्योंकि आपको पता है हमारे पास पाकिस्तान में ये मसला भी बहुत होता है कि ओनरशिप किसकी है इस लैंड के ऊपर, ये ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है नहीं हो चुकी है, बाद में पता चलता है, 10 साल बाद पता चलता है किसी को कि ये तो किसी और को बिक गई थी, और ये पता नहीं 50 लोगों को और भी बिक चुकी है, हमें पता ही नहीं चलता। तो इस चीज को खत्म करने के लिए जैसे आप ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं कि आपने ब्लॉकचेन को इस्तेमाल किया, और इसके बाद आपने ये किया कि लैंड रजिस्ट्री के अंदर वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो आपको वहीं से ही पब्लिकली अवेलेबल डेटा मौजूद है कि इस प्लॉट का कौन कौन ओनर बनेगा और कौन ऑलरेडी ओनर है। और अगर फर्ज करें कि उसकी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर होती है, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा भी वहां पर अपडेट हो जाएगा। तो इससे फिर आप इस कंफ्यूजन से और फ्रॉड से बच सकते हैं। इसी तरह सर मेरा पर्सनल लास्ट क्वेश्चन। के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने आइडेंटिटी फर्ज करें कि ब्लॉकचेन पर रखी हुई है, आप इलेक्शंस जो हैं उसके लिए भी आप ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इसके यूज केसेस हैं नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी। आप इसको अगर सर्च करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत सब कुछ मिल जाएगा। इसके हजारों मतलब आप कह लीजिए यूज केसेस हैं नॉन फाइनेंशियल। सर मेरा यस। लास्ट क्वेश्चन है, मैं जो अभी फोकस कर रहा हूँ वो डाटा साइंस डाटा एनालिस्ट की तरफ कर रहा हूँ, तो क्या एज अ डाटा साइंस कैरियर जो चूज कर रहा हो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से परस्यू, मतलब कहाँ गैप और अपॉर्चुनिटी देख सकता है, तो इस पे थोड़ा सा और बता दें। देखिए, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ऐसा है कि फर्ज करें आपके पास सबसे पहले तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से डेटा कैप्चर हो रहा है, ठीक है। आईओटी डिवाइसेस, वी कॉल देम आईओटी डिवाइसेस। तो आईओटी डिवाइसेस के थ्रू क्या होता है कि आपने कोई ना कोई डेटा कैप्चर कर लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद किया ये कि उस डेटा को स्टोर करना है और शेयर करना है, उसके लिए आपके पास ब्लॉकचेन होगी। सही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपने यूज कर ली, वहां पे डेटा को स्टोर भी कर लिया आपने, उसको शेयर भी कर लिया। उसकी बेसिस पे आप डेटा एनालिटिक्स और डेटा प्रिडिक्टिव मॉडल्स जो हैं वो डिजाइन कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि वो कहाँ पे जाएगा। डेटा विजुअलाइजेशन भी हो सकती है ब्लॉकचेन की, और इस तरह की और भी चीजें हो सकती हैं। आपको मैं एक और मिसाल दे सकता हूँ जहाँ पे हमने ब्लॉकचेन यूज करी थी, वो था हलाल सेक्टर। कि देखें, हमें पता नहीं होता कि गोश्त है, फर्ज करें कि वो गोश्त कहाँ से आया है, हलाल तरीके से ज़िबा हुआ है नहीं हुआ है, उसके लिए भी हम ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट था प्रीवियसली बैक इन 2017 and 18. So what they did is basically they wanted to put all the data of, let's suppose कि एक चिकन है, वो जब पैदा हुई है उस वक्त से लेकर टेबल तक, जब वो सर्व हुई किसी कस्टमर को कंजम्पशन के लिए, यानी ईट के लिए एज अ डिनर, तो वहां तक का सारा डेटा ब्लॉकचेन पर हम डाल देंगे। तो उससे आपको कंज्यूमर को ये भी पता चल जाएगा कि मिसाल के तौर पे जो चिकन वो खा रहा है, वो चिकन कहाँ पैदा हुई, कौन से रीजन में पैदा हुई, फिर उसके बाद वो कब ज़िबा हुई और कैसे ज़िबा हुई, वो इस्लामिकली ज़िबा हुई थी या नहीं हुई थी, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तो कोई कंटामिनेशन ऐसी नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो हलाल नहीं रही हो। फिर उसके बाद जब वो आ, हलाल थी, फिर उसके बाद सुपरमार्केट्स में या फिर किसी उधर आई, वहां से रेस्टोरेंट्स ने खरीदा, तो ये सारा का सारा डेटा आप कैप्चर कर सकते हैं और उसको ब्लॉकचेन पे डाल सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। और रेस्टोरेंट से खरीदने के बाद जब उसको सर्व किया गया, तो वहां तक तमाम का तमाम डेटा आप ब्लॉकचेन पे रख सकते हैं। वो उस प्रोजेक्ट का बेसिकली कोर ऑब्जेक्टिव था कि वो ये करना चाह रहे थे। अगेन इट्स अ नॉन फाइनेंशियल यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन। यस हसन। Yes. One last question. I'm actually from construction industry. I'm a civil engineer. Recently, I have been studying on blockchain and how can it works in the construction supply chain and procurement, because there are a lot of issues in construction globally,
not in just Pakistan, but in all the countries. So the construction company face issue in the transaction of data. For example, one company is providing material or design to another company, so that they face a lot of changes in transacting this. I'm studying on these things, and I got to know about construction blockchain consortium that is started by University College London. So they have certain case studies on their website, and they are researching on blockchain, that how can we implement blockchain technology in the construction industry. So my question to you is, have you worked on any sort of project that belongs to real estate or construction? And can you guide me that how can I further my study, and how can I carry on my research and implement some solutions to the construction industry, that is to the problems that the construction industry is facing? Thank you. Mhm. Jazakallah khaira. Thank you so much for your question. Actually, I haven't been involved into construction, although like my father and my brother, they are all civil engineers. They are into construction business, but I never got a chance to get involved into it, so I do not know. But generally speaking, construction business, supply chain, raw material, everything can be traced through blockchain. So it's not. It's something which is a very good use case for construction. But what I can say is I have worked with, basically potentially I am going to work with some of the real estate businesses who are developers and also builders of different projects. So what they want to do is basically, let's suppose you have they do the tokenization of real estate. What does it mean? Is that, like, let's suppose that you have a building, and now you want to sell this project, for example. So what you can do is, like, instead of selling it to people, and again there is a problem of ownership, what you can do, you can fractionalize this whole building, number one, and then you can issue tokens on blockchain, and each token will represent a small fraction of ownership in that building itself. Let's suppose that this building is a hotel building. It's a 5-star hotel. Now you can tokenize it, and then there will be multiple 1 million, 2 million, even 100 million people can be the owner of this whole building in the and sharing the fractional ownership of that building. And what happens is that then they can do two things now. Number one is, like, they can hold the token, and if, let's suppose, once the business starts of hoteling in that building, people start paying rent or whatever it is. I mean, this will become your dividend. So, like, you are holding that token and receiving dividends. And also you are also, second thing is, like, you are creating a very liquid market that whenever you want, even for 1 hour or 1 day or 1 week or 1 year, you want to hold that token, and after that you want to sell it, you can easily sell it in the market, because there is a liquid secondary market for that. So that's how basically you can tokenize real estate. And this is basically something which is already being done. I would suggest you to look into a company which is called DigiShares. So what they do is, like, they can actually issue shares of different assets, real estate, non-real estate even, and tokenize them. So they have their platform. So they have a lot of use cases on their website as well for this. Yes, Muhammad Tariq. Assalamu alaikum. Thank you for giving me opportunity. और आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल. जी, thank you. So जिस तरफ कन्वर्सेशन जा रही है, मेरा भी यही चीज डिस्कस करने का इरादा था, बिकॉज यू सेड कि पाकिस्तान के अंदर कंसोर्शियम बेस्ड ब्लॉकचेन कैन वर्क, एंड पोटेंशियली these kind of use case would be the first use case we can bring in Pakistan, जिसके अंदर इस्लामिक बैंक्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है. So we can at least tokenize and register those assets on a consortium blockchain and let banks allow to put all those assets and tokenize them.
खास तौर पे लाइक इवन जो बड़े बड़े हमारे कमर्शियल बैंक्स भी हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा उन्होंने परचेज किया, पास क्रिएट न्यू न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स आउट ऑफ इट एज वेल। फिर उसके अंदर रीट का एक एक फैक्टर भी लाया जा सकता है। इज दिस समथिंग डूएबल एंड डू यू थिंक लाइक इवन इस्लामिक बैंक्स तो एसेट फाइनेंसिंग बहुत सारा डिफरेंट किस्म की कर रहे होते हैं आजकल। हमारी इवन पाकिस्तान के अंदर जो है ना, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करने की बात की जा रही है, पीआईए हो गया या एयरपोर्ट्स को। तो यहाँ पे सुकूक जिस तरीके से गवर्नमेंट भी ये कर सकती है कि इन चीज़ों को टोकनाइज करके ब्लॉकचेन के ऊपर डाल के, और जो है फ्रैक्शनल जो है वो ओनरशिप इसी कंट्री के लोगों को दे दे, और फाइनेंसिंग रादर देन आईएमएफ से हासिल करने के वो इसी कंट्री के लोगों को जो है वो ट्रांसफर कर दी जाए। हाँ Is this बिल्कुल something ऐसे doable as well? And can this could be like initial use cases in Pakistan? या इट्स नॉट ओनली डूएबल बट आई थिंक दैट आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि इस तरह होना चाहिए, इट शुड बी डन। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास एक तो ये है कि इस्लामिक बैंक के अंदर आपको पता है कि इट्स ऑल एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग, सो लाइक यू नीड एसेट, शरिया कंप्लाइंट एसेट्स आर नॉट I mean like they are scarce and we do not have a lot of Sharia compliant assets, number one। ठीक है, आपको भी पता होगा कि हमारे पास इस्लामिक बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम इसीलिए आता है क्योंकि उनके पास वेन्यूज नहीं होते कि वो कहाँ पे कैपिटल पार्क करें अपना। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि टोकनाइजेशन इज द बेस्ट वे टू एड्रेस दिस इशू। उसके साथ साथ ये होगा, एक तो आपके पास नए एसेट्स जो हैं वो आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे इस्लामिक बैंक को। नंबर टू, आपके पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा जो आपको मेन प्रॉब्लम इस्लामिक बैंक को आता है वो आता है लिक्विडिटी मिसमैच का। वो ये होता है कि आपके एसेट जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं और वो क्योंकि उसकी मार्केट जो होती है वो इतनी ज्यादा लिक्विड नहीं होती, जबकि आपके पास लाइबिलिटीज जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो लिक्विड होती हैं, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। तो उसको आपके पास एक एसेट मिसमैच आ जाता है, सही है, एसेट एंड लायबिलिटी मिसमैच। तो उसकी वजह से फिर आपको, मैं समझता हूँ कि टोकनाइजेशन अगेन कैन बेसिकली एड्रेस दिस इशू। तीसरी जो आपने बात करी वो भी हाँ है कि भाई बहुत सारे हमारे पास ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम अगर टोकनाइज करके अपने ही लोगों के अंदर रखें ताकि हम वी कैन बेसिकली क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं, हम एयरपोर्ट्स बना सकते हैं, या एयरपोर्ट्स जो एग्जिस्टिंग भी हैं उनको हम बेसिकली टोकनाइज करके जो है अपने ही लोगों को देके फंड रेज कर सकते हैं। जैसे सुकूक की आपने बात करी, सुकूक इटसेल्फ टोकनाइज हो सकता है, बल्कि आपको फिर अगर फर्स्ट करें टोकनाइजेशन का अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो आपको सुकूक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सुकूक जो काम कर रहा है उससे ज्यादा एफिशिएंट वे में वो टोकन खुद डायरेक्टली वही काम करेगा कि आपका जो टोकन है वही आपका सुकूक भी बन जाएगा, वही आपका बॉन्ड भी बन जाएगा, शेयर्स भी बन जाएगा कंपनी के अंदर। और फिर उसके बाद होगा ये कि आप इमेजिन करें कि आई मीन लाइक इट हैज सो मच पावर इन इट कि यू आर नॉट ओनली हैविंग द टोकन इटसेल्फ फॉर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस बट ऑल्सो यू कैन यूज दिस टोकन फॉर एक्सचेंज पर्पसेस बाद में जाके। मतलब द ड्रीम is basically to have a currency which is also a sort of investment, कि आपके पास फिर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम कैसे रहेगा क्योंकि वो आपकी जो करेंसी है वो एसेट बैक्ड है सारी की सारी। तो आई होप दैट कि मैंने बहुत ज्यादा इसको कन्फाइन करके और ब्रीफली टच किया है, लेकिन यू गेट माई पॉइंट। जी इकबाल हुसैन साहब। जी इकबाल हुसैन साहब बोलिए। I'm not sure, like I am okay to extend more time, but it is actually depending on the organizers and the participants if they want to sit or if they want to. डॉक्टर साहब एक I, सवाल मुझे करना था, अली आबिद बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए जी, कि ये अगर जैसे पाकिस्तान में कोई बैंक है और वो बिट जो है जो ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट होना चाहता है, तो वो उसको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? वो रेगुलेटरी अथॉरिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उसको? हाँ उसके प्रोसेसेस तो हैं, क्योंकि देखें असल में सबसे पहला तो रेगुलेटरी इश्यूज हैं। रेगुलेटर्स को बेसिकली फॉरवर्ड थिंकिंग
करनी पड़ेगी और उनको आई मीन दे हैव टू बी रेडी फॉर द इनोवेटिव साइड ऑफ फाइनेंस एंड द ब्लॉकचेन इटसेल्फ. I mean, if they are skeptical about cryptos, then it's still understandable. But I think that blockchain is something we can always use. जहाँ तक बैंक का ताल्लुक है, तो एक तो उनके पास जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि रेगुलेशंस और रेगुलेटरी इश्यूज उनके पास होंगे काफी ज्यादा. रेगुलेटर्स को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा. नंबर 2 ये है कि खुद बैंक्स को अपना लेगेसी सिस्टम जो है वो चेंज करना पड़ेगा. उनके प्रोसेसेस चेंज हो जाएंगे, उनके बिजनेस मॉडल भी चेंज हो सकता है इसके, या बिजनेस मॉडल अगर वही रहे लेकिन प्रोसेसेस जरूर चेंज हो जाएंगे, उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. तो वो सारी चीजें उनको देखनी पड़ेंगी. हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि ओवर द नाइट एक एस्टैब्लिश बैंक हो और वो एकदम से अपने आप को बोले कि नाउ वी आर कन्वर्टिंग आवरसेल्फ इनटू ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम. तो व्हाट दे कैन डू इज बेसिकली कि वो एक पायलट प्रोजेक्ट्स करें, पीओसीज वगैरह स्टार्ट करें. कि फर्ज करें कि आपने एक प्रोडक्ट जो है वो ब्लॉकचेन पे निकाली, फिर उसके बाद उसको मजीद एक्सपेंड करते करते आपने 2 प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट सर्विसेज निकालना शुरू कर दी और फिर उसके साथ साथ आपने काम करना शुरू किया. व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आई मीन आउट ऑफ पाकिस्तान, के बैंक्स जो है दे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड offering services to their high net worth individual clients to have custodial services of digital assets. उससे क्या होता है कि आपके पास जब कस्टोडियल सर्विसेज आपने प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं तो आपके पास उन डिजिटल एसेट्स की कस्टडी आ गई है. फिर उसके बाद आपने स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, कि आप उनको स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बना के देना चाहते हैं. फिर उसके बाद आपने ये किया कि आहिस्ता आहिस्ता भी आपको पता है कि बिटकॉइन के ईटीएफ्स वगैरह भी जो हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वो भी अप्रूव हो चुके हैं यूएसए के अंदर, ऑलमोस्ट 10. ठीक है, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि ये नॉट ओनली उसके साथ एक तो ये होगा कि बिटकॉइन के बाद दूसरी क्रिप्टो एसेट्स का जो है वो टाइम आ जाएगा, इथेरियम के ईटीएफ्स भी आ जाएंगे. फिर उसके बाद होगा ये कि वो जो ईटीएफ्स आ रहे होंगे वो खुद टोकनाइज भी हो सकते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे. वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं बिटकॉइन एटीएफ के अंदर. तो आप समझ रहे हैं कि अब दूसरे बैंक्स भी उसके अंदर दे विल जॉइन द बैंड वैगन एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग दोस ईटीएफ फॉर देयर ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑल्सो और कैपिटल मैनेजमेंट. तो इस तरह से होना शुरू हो जाएगा. जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपके फिर कंज्यूमर फाइनेंसिंग और दूसरी प्रोडक्ट्स भी जो है वो इस तरह से ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट हो सकती हैं. तो एक प्रोसेस है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स आप उसको रिटेल बैंकिंग से के साथ शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं. आप उसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की साइड पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियल बैंकिंग की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. और आई थिंक ये तो टॉपिक ऐसा है कि जो है ना वो ख़त्म नहीं हो पाएगा. सवालात जो है वो काफ़ी हैंगे और इमर्जिंग इशू है. और ओबियसली जिस तरीके से हमारी दुनिया चेंज हो रही है, और डेफिनेटली मैं खुद भी बड़ा एक्साइटेड था जब ये क्या नाम है आपको होस्ट करने के हवाले से जो है वो ये चीज जो है मैनेजमेंट ने डिसाइड की थी उस हवाले से. तो सो नाइस टू सी यू. और आई हर्ड के अल सादिक जो है ना वो ऑलरेडी कोर्स भी इसमें जो है ना वो ऑफर कर रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर, फिनटेक के ऊपर. तो डेफिनेटली विल कांटेक्ट यू अगेन. और थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ अल सादिक फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल वेबिनार. और इंशाल्लाह जो है ना आपसे इंशाल्लाह फिर बाद में मुलाकात होगी. थैंक यू. Inshallah. Thank you so much. Thank you so much everybody. Assalamu alaikum. Take care.